In the last lecture, we have studied potential energy and its types. As you know, there are two types of potential energy. One is gravitational potential energy and another is elastic potential energy. Gravitational potential energy is due to the position and elastic potential energy is due to the shape or configuration. So today's topic is elastic potential energy. We have to find the expression for it in case of a helical spring. So what is elastic potential energy? It is the energy possessed by a body due to its shape, oblique configuration. Right? तो इस एनर्जी को हम कहते हैं elastic potential energy, which is due to the shape. एरो एंड बो सिस्टम हमने लिया था, स्प्रिंग की बात की हमने, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि पहले ज़माने में एक वॉच हम यूज़ करते थे जिसमें एक हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ होता था। तो उस घड़ी को चाबी देनी पड़ती थी, उसको स्प्रिंग वाइंड करना पड़ता था, तो वो धीरे धीरे अनवाइंड हो जाता था और वो उसकी हैंड्स को चलाता था। तो आज हम एक स्प्रिंग कंसिडर कर लेंगे, हेलिकल स्प्रिंग है ये, और इस स्प्रिंग को अगर हम इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। सो x इज इक्वल टू 0 नॉर्मल पोजीशन। दूसरे स्टेप में हमने इसको इलोंगेट किया है, जो बॉडी इसके साथ अटैचड है इसको हमने डिस्प्लेस किया है थ्रू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, लेकिन स्प्रिंग में इलोंगेशन हुई है। एक्सटर्नल फोर्स राइट डायरेक्शन में है। स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है कि जब इसको इलोंगेट कर लेते हैं तो एक और फोर्स इसमें डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आ जाता है, बिकॉज इट इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कंप्रेस किया है। कंप्रेशन में भी एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा और वो रेस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमने दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट लिया है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। चाहे आप इसको इलोंगेट कर लीजिए या चाहे आप इसको कंप्रेस कर लीजिए, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दैट गिव्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, then the spring will be either elongated or compressed. A restoring force will develop, therefore it attains the capacity of doing work, and this type of energy is known as elastic potential energy. So for this, let us consider a spring which is either compressed or elongated, यानी हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या स्प्रिंग को हम elongate कर रहे हैं। A body
of mass m attached to it is displaced through x. तो जब हम इसको कंप्रेस कर लेंगे या इलोंगेट कर लेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। कंप्रेस करने के लिए भी, इलोंगेट करने के लिए भी। सो व्हाट विल हैपन इन द स्प्रिंग, बिकॉज इट इज इलास्टिक इन नेचर, a restoring force is produced which will bring it back to its normal position, right? तो ये है इसकी नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन, a restoring force is developed in it which will bring it back to its normal position, right? Restoring force. तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, द रेस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा किस पे डिपेंड कर लेता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। आपने फर्स्ट केस में इलोंगेट किया है, एक्सटर्नल फोर्स राइट होगा। रिमूव कर लीजिए इस फोर्स को तो रेस्टोरिंग फोर्स विल ब्रिंग इट बैक। सो रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स राइट। एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो इट विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। सो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स के बदले में एफ डाल देंगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। लार्जर द डिस्प्लेसमेंट, लार्जर विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स एंड वाइस वर्सा। और वी कैन राइट हियर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वायर के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसे एक और नाम से जानते हैं फोर्स कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। दिस रिलेशन इज नोन एज A relation is known as Hooke's law. Now, one thing you must remember, the external force is just equal to restoring force and opposite to it. Opposite to it. यहाँ पे F external towards right, restoring is towards left. यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, F external towards left, यहाँ पे restoring force right. That means they are equal and opposite. So we can write here F external is equal to minus F
or we can write here F is equal to minus F external. इसको शिफ्ट कीजिए, प्लस होगा, इसको शिफ्ट कीजिए, माइनस बन जाएगा. So we will get here, हमारे पास रिलेशन है F is equal to minus kx. F के बदले में हम डाल देंगे F एक्सटर्नल माइनस इज इक्वल टू माइनस kx. माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा. So you will get here F external is equal to kx. Now we will find the work done in order to displace the body through a distance of small dx, or work done for a displacement of dx is, that will be dw. It is f dot dx. लेकिन यहाँ पे हम एक्सटर्नल साथ रखेंगे, f dot dx, work done by the external force to elongate or to compress the spring for a displacement of dx. External force or displacement, they are in the same direction. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट भी है टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इन दो के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी जीरो. तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एफ एक्सटर्नल dx cos of theta. So here theta is equal to 0 degree, right? Implies cos of 0 degree is equal to 1. So we will get here dw is equal to f external dx. F external dx. Now we can find the total work done if the body is displaced or the spring is elongated from a displacement 0 to x. Total work done in displacing the body through a displacement of 0 to x, then यहाँ पे w होगा, that is integral of dw, which is equal to integral of just a minute. So integral of f external dx from 0 to x, but f external is equal to kx. So w is equal to integral of kx dx from 0 to x. K is constant, so it is integral of x dx from 0 to x. So we will get here k into integral नहीं, अब इसकी इंटेग्रेशन लिखेंगे तो ये it will become x square divided by 2 from 0 to x. So you will get here it is x square divided by 2 minus 0 square divided by 2 using the limits, और w is equal to ये 0 होगा, so it is 1/2 of kx square. 1/2 of kx square. This work done
This work done is stored as elastic potential energy. This work done is stored as elastic potential energy. Therefore, we can write here U is equal to 1/2 of kx square. So this is the energy known as elastic potential energy. Now you know फर्स्ट पॉइंट इसको हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर बाय स्प्रिंग. सो दिस इज द एनर्जी stored when spring is compressed or elongated, right? Number second, it is always positive. Always positive. It is never negative. When the spring is in a relaxed state, energy is equal to 0. So in a relaxed state of spring, U is equal to 0. Units and dimensions are same as that of energy. Now, one more point. Spring constant, or we can say force constant. Spring constant. Since we know F is equal to minus kx, or k is equal to F divided by minus x, और k is equal to F divided by, यहाँ पे x हम एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे इसका. तो यहाँ से आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन मिलेगी. इट इज फॉर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स पर यूनिट displacement, the restoring force per unit displacement, or we can say it is external force per unit displacement. So इसकी definition बन जाती है force constant is defined as restoring force per unit displacement, or we can say external force per unit displacement of a spring. So this is definition. Since k is equal to F divided by x, तो इसका यूनिट होगा CGS यूनिट. इसका हो सकता है CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, सेंटीमीटर. सो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर. इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. सो इट इज न्यूटन पर मीटर. इसी तरह से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर लेंगे. फोर्स के डायमेंशन है M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L1. तो L और L कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर इट इज M1 L0 T raised
z to power minus 2. So these are the dimensions of force constant or spring constant. So it will do for today. In the next lecture we will discuss conservative and non-conservative forces. Okay, thank you.